Okay. In online lectures, we will discuss gastrointestinal pharmacology. One minute. Gastrointestinal pharmacology. Or the GIT pharmacology. GIT pharmacology. In GIT pharmacology, we will discuss uh, drugs drugs to treat ulcer. Okay. First, we will discuss the drugs. Those are going to treat the ulcer. What is ulcer? What is pathophysiology of the ulcer? And what are the drugs those are going to treat the ulcer? We will discuss. Okay. Next, we will discuss drugs drugs to treat diarrhea. What is diarrhea? What is pathophysiology of diarrhea? What are the types of the diarrhea? And what are the drugs to treat diarrhea? Okay. Next, we will discuss uh, drugs to treat constipation. What is constipation? Okay. Constipation. Okay. And next, after constipation, we will discuss drugs to treat, sorry, drugs to treat emesis. Emesis means vomiting. Emesis means vomiting. Okay. We will discuss these four diseases in gastrointestinal pharmacology. ठीक है, जिसमें हम अल्सर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डायरिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस करेंगे और जिसमें हम वोमिटिंग को डिस्कस करेंगे. ठीक है, जिसको उल्टी भी कहते हैं. कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज. ठीक है. अल्सर हमने सुना होगा, बाज मरीज कहते हैं कि जो है ना मुझे जलन हो रही है. ठीक है, क्या हो रही है? जलन हो रही है. अल्सर में बेसिकली जलन होती है. डायरिया आपको पता है, वाटर सिक्रेशंस. ठीक है, जो हमारे स्टूल से पास होती हैं, बार बार हमें अर्ज होती है फॉर डेफिकेशन. ठीक है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अल्सर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. बिफोर वी गो इनटू द pathophysiology of the ulcer, we should know the physiology of HCl production, as we have already studied in our first year physiology in GIT. मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोगों को HCl की प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. तो before we go into the pathophysiology of the ulcer, means what are the factors those are going to initiate the ulcer. ठीक है, वो होती है पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है, फिर हम उसके बाद ड्रग्स की तरफ आएंगे. तो पैथोफिजियोलॉजी में मैंने आप लोगों को बताया था, पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता है फिजियोलॉजी चल रही है, उसको कुछ ऐसे फैक्टर्स ने आके डी ट्रैक कर दिया. ठीक है. एज वी नो दैट व्हेन फिजियोलॉजी गेट्स रॉन्ग और गोज रॉन्ग इज पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है. तो रॉन्ग कैसे होती है? जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर आर गोइंग टू इंटरप्ट द नॉर्मल रनिंग फिजियोलॉजी. ठीक है, तो क्या बन जाती है? पैथोफिजियोलॉजी. मतलब कि वो नॉर्मल सिस्टम चल रहा था, अब उसके अंदर देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो उसके अंदर कोई बिगाड़ पैदा हो गया. ठीक है, तो दैट इज पैथोफिजियोलॉजी. जब तक हम फिजियोलॉजी को नहीं जानेंगे तब तक हमें पैथोफिजियोलॉजी का पता नहीं लगेगा, और जब जब तक हम पैथोफिजियोलॉजी को नहीं जानेंगे हमें ड्रग्स का आइडिया नहीं होगा. ठीक है. देन फर्स्ट वी विल सी द फिजियोलॉजी ऑफ द फैक्टर्स फॉर अल्सर. ठीक है, फिर हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्सर को जाके, सॉरी, जो अल्सर को कर रहे हैं. ठीक है, फिर हम ड्रग्स की तरफ आएंगे. तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स. एंटी अल्सर ड्रग्स. ओके. बिफोर स्टार्टिंग द एंटी अल्सर ड्रग्स वी विल फर्स्ट डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ एचसीएल प्रोडक्शन. क्या? फिजियोलॉजी ऑफ फिजियोलॉजी. सब बच्चे नोट करेंगे. फिजियोलॉजी ऑफ HCl production. Okay. As you people already know, this is stomach. Okay, right? This is stomach, and there are different parts of stomach: antrum, fundus, body, pylorus. Okay, different segments हैं इसके. ठीक है, ये
ये एक पोर्शन है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये वाला और पोर्शन है, फिर उसके अलावा देन देयर इज अनदर पोर्शन, ठीक है। तो द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द parietal cells of stomach. This is stomach. Okay, and we are going to discuss the parietal cell of stomach. Okay, next, now I'm going to draw the parietal cell of stomach. Everyone has to uh, switch off their mics. Everyone has to draw this diagram. Okay, this is the parietal cell of the stomach. Okay, and this is the basolateral side. This is the basolateral side. This one, basolateral side. As you people already know, the basolateral side is facing blood. Basolateral side is facing blood or basolateral membrane, and here is the luminal membrane. Luminal membrane or side. Okay, and this is the diagram of parietal cells. Parietal cells, and these parietal cells are basically responsible for the production of HCl, as you people already know it. Okay, okay. In the basolateral side, uh, here is the blood supply. Here is the blood supply or the blood vessel that is going to supply the blood to stomach. Okay. Then there is the nerve supply. Then there is the nerve supply, neurons, and there are some other cells here. There are some other cells here. Okay. And as you people already know, आप लोगों को पता है कि parietal cells के ऊपर different types के क्या है receptors हैं. There is one type of receptor, and these are which type of receptor? आप लोगों को पता है कौन से receptor है, इनको क्या कहते हैं? Hmm? I have already told you people many times. क्या नाम है receptors का? Hmm? क्या नाम है? CR. What is the name for these receptors? Yes, or G protein coupled receptors or G protein coupled receptors. Okay, and here is the pump. Here is the pump. That is basically uh, hydrogen potassium ATPase pump है, ठीक है. That is responsible for that is responsible for outward movement of hydrogen ions. Is responsible for outward movement of hydrogen ions. मतलब कि ये सेल है, इसके अंदर से हाइड्रोजन आयंस को बाहर भेजता है and is associated with influx of potassium ions. Potassium ions move inside, and after that these potassium ions through potassium channels again go back to the extracellular fluid. Okay. अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? HCl की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है. ओके, ये हमारी ब्लड वेसल है. ये क्या है? ब्लड वेसल है. ये अब क्या होगा? ये ये जो ब्लड वेसल है ना, इसके अंदर इसके अंदर होता है गैस्ट्रिन. मतलब कि ये कहाँ से आ रहा है मैं अभी बताता हूँ. गैस्ट्रिन, ये क्या है? गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन जो है वो जी सेल्स ऑफ एंट्रम से रिलीज होता है, ठीक है.
और फिर किधर जाता है, ब्लड में फिर जाता है, और फिर ब्लड से वो किधर पहुंचता है, पाराइटल सेल्स के ऊपर मौजूद अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगते हैं, और ये इसका रिसेप्टर है, किसका, गैस्ट्रिन का। ओके। अब ये जो गैस्ट्रिन रिसेप्टर दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंड जी प्रोटीन दैट इज एसोसिएटेड विद दिस गैस्ट्रिन इज जी क्यू सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो जी क्यू प्रोटीन होती है, ठीक है, जी क्यू, वो जाती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो फॉस्फोलाइपेज पीएलसी, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करती है। फॉस्फोलाइपेज सी फिर आगे जाके क्या करते हैं, पी आई पी टू की ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, जिससे हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। ठीक है, एक आई पी थ्री बनता है, और दूसरा हमारे पास डैग बनता है, डाई असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, दैट इज डाई असाइल ग्लिसरॉल। फिर ये आई पी थ्री की तरह जाता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद लाइगेंड गेटेड आयन चैनल को ओपन करता है, जिस वजह से कैल्शियम और फ्लक्स होता है, और यहाँ पे कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। सही है, दिस इज द वन पाथवे, दिस इज द वन पाथवे। अच्छा, एंड द नेम ऑफ दिस रिसेप्टर इज, एवरीवन हैज टू राइट आई विल चेक इन द क्लास, जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ मैंने वैसे चेक करना होगा। ओके, एंड द नेम फॉर दिस रिसेप्टर इज सी सी के बी रिसेप्टर, सी सी के बी रिसेप्टर। ओके, just like this there is another receptor, and the name for the receptor is M3 receptor, that is M3 receptor, M3 receptor. And the ligand for M3 receptor is acetylcholine, which is coming from the vagus nerve, post ganglionic fiber of uh, vagus nerve. Post, as you people know that there are two type of the fibers: preganglionic nerve fibers and post ganglionic nerve fibers. So this is the portion which is innervating the organ is post ganglionic nerve terminal. So this is the post ganglionic nerve terminal of the vagus nerve. As you people already know, vagus is one of the major nerve कंट्रोलिंग मेजर पोर्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक का मेजर पोर्शन को ये कवर करती है, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ से क्या रिलीज होगी, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज गोइंग टू बी रिलीज फ्रॉम हियर, कौन बताएगा, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज गोइंग टू बी रिलीज, विच न्यूरो ट्रांसमीटर, as you people know that parasympathetic nervous system is the system of the rest and digest. So in rest and digest parasympathetic is over or dominating, and you people know that which neurotransmitter is linked with parasympathetic nervous system. एब्सोल्युटली एसिटाइलकोलिन इज देयर। ठीक है, अब एसिटाइलकोलिन आ गई, वो एसिटाइलकोलिन अपने कौन से रिसेप्टर को ऑन करेगी, ये मस्कुलिनिक M3 रिसेप्टर। एंड यू पीपल नो दैट M3 रिसेप्टर आर आल्सो एसोसिएटेड विद द GQ pathway, with GQ pathway. So definitely when acetylcholine is going to be released, it will activate its M3 receptor, and this M3 receptor is again coupled with GQ, and there is ultimately increase the level of calcium in the parietal cell of stomach. Okay, right. अभी हम आगे जाते हैं कि किस तरह ये होता है। नेक्स्ट इज द, ओके, देयर इज एनी क्वेश्चन टिल, अभी तक कोई ऐसा बंदा जिसको कोई क्वेश्चन हो, कि जिसको कोई अभी तक समझ नहीं आया तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। देयर इज एनी क्वेश्चन टिल नो। ओके, मैं ये ना इसको रिपीट करूंगा, डोंट वरी, अभी ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट मूव फर्दर। आगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताए, मैं रिपीट करूंगा इसको, कंप्लीट इसको जो है ना ब्रीफ करूंगा एंड पे जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कम टुवर्ड्स अदर रिसेप्टर, नेक्स्ट कम टुवर्ड्स एन अदर रिसेप्टर, एंड द नेम फॉर द रिसेप्टर इज, and the name for receptor is H2 receptor. What? H2, and H2 means histamine. H2 means histamine receptor. Okay. And from where histamine is going to be released? Histamine is going to be released from this type of cell that I have just mentioned here. And the name of cell is ECL cells. ECL cells. What is meant by ECL cells? Enterochromaffin like cells. ECL cells mean enterochromaffin like cells. Enterochromaffin like cells are the cells which are present nearby to the parietal cells. And parietal cells are the part of the oxantic glands. Okay? Oxantic glands are responsible for acid production. Oxantic oxantic glands. Okay, fine. Okay. These are the enterochromaffin like cells. Those are present nearby parietal cells. अब क्या होता है कि ये जो enterochromaffin like cells होते हैं ना, these cells are responsible for the release of histamine from here. And these receptors are going to activate these H2 receptors. And listen and remember, these H2 receptors are linked with GS pathway, are linked with GS pathway. As you people know that here is
the enzyme that is adenylyl cyclase. That is adenylyl cyclase. So here is the GS system. GS system is going to activate here the adenylyl cyclase. This adenylyl cyclase is going to further do the activation of some second messenger, and it increases the level of uh, cyclic AMP by ATP. I'm not going to elaborate all what is happening with GS and GQ. Okay, so then this cyclic AMP is going to activate an enzyme that is called as cyclic AMP dependent protein kinase PKA. cyclic AMP dependent protein kinase A का लेवल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन रिसेप्टर्स हैं जो कि अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे। ओके, okay, listen and remember. Here is the vesicle. Here is a vesicle. Here is the vesicle that is uh, basically have these potassium hydrogen ATPase pump. You had potassium or hydrogen ATPase pump, just like this. ठीक है, ये क्या है बेसिकली? ये पंप्स है। ये क्या है? पंप्स हैं। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, अब क्या होगा? लिसन एंड रिमेंबर, इज देयर गैस्ट्रिन और एसिटाइलकोलिन और हिस्टामिन 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 अपने H2 रिसेप्टर को ऑन करेगी, मस्कुलिन एसिटाइलकोलिन जो है वो अपने मस्कुलिन M3 रिसेप्टर को ऑन करेगी, गैस्ट्रिन जो है वो अपने CCK-B रिसेप्टर को ऑन करेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा? कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा। अल्टीमेटली क्या होगा? कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा। ये देखो, यहाँ पे कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए का लेवल ज्यादा हो रहा है। सही है। एंड लिसन, एक और चीज भी है यहाँ पे, एक और चीज भी है, दैट इज प्रोटीन काइनेज सी। प्रोटीन काइनेज सी और पीकेसी क्या करता है, और कैल्शियम क्या करता है, और प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है? इन तीनों का एक ही काम है, क्या? दिस पीकेसी, दिस कैल्शियम और दिस प्रोटीन काइनेज सी। ये इस जो वेसिकल है, ये जो वेसिकल है, वेसिकल, दिस वेसिकल, द वेसिकल कंटेनिंग दिस हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पम्प वेसिकल। ठीक है, इनको क्या कर देता है? इसके फॉस्फोराइलेशन करता है। याद है जब हम डिस्कस कर रहे थे क्या, ADH, तो मैंने आप लोगों को बताया था वेसिकल्स होते हैं दैट कंटेन पोरिन चैनल्स। व्हेन देयर इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ these vesicles, those पोरिन channels gets inserted into the apical membrane of collecting tubules or principal cells in case of kidney. तो just like that इधर भी क्या होगा? प्रोटीन काइनेज सी, कैल्शियम एंड प्रोटीन काइनेज ए, these are going to phosphorylate this vesicle. Phosphorylate this vesicle. When this vesicle gets phosphorylated, it start inserting its hydrogen potassium ATPase into this membrane, इस जगह पे। एंड एग्जाम्पल ये मैंने नीचे में, अब ये क्या करेगा? यहाँ पे ये इस पंप को इंसर्ट कर देंगे, ये सारे पंप की तरफ चले जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। ये जो पंप है ना हमारा, ये वाला एग्जाम्पल ऑफ दिस। ओके, दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन अदर मीटिंग। ठीक है, so you people have to join it again, then we will briefly discuss, and after 5 to 10 minutes the lecture will be over. Okay, let's join the lecture again. Okay, in the previous lecture, we discussed the physiology of HCl production. Okay, that how HCl is going to be produced in the parietal cells of stomach. Okay, now today we will discuss the, as in the previous lecture, I told you people there is a balance between. Listen and remember, there is a balance between the HCl production and its protective mechanisms. And today we will see what are those protective mechanisms those are going to counter the HCl response। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि HCl की जो प्रोडक्शन है उसको कम करते हैं। ठीक है, ओके, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। ओके,
अब हमने इसमें देखना है कि कौन कौन से वो प्रोटेक्टिव जो है ना फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, द फर्स्ट फैक्टर इज somatostatin. The first factor is somatostatin. Somatostatin. SST. Okay. Somatostatin का क्या रोल है? What is the role of somatostatin here? What somatostatin is going to do with SCL production? Okay. Somatostatin is associated with decrease, listen, decrease gastrin gastrin release. And all you people know that gastrin is responsible for increase of the HCl production, increase of the HCl production. But here somatostatin is going to counter that HCl production increase और increase in the HCl production, right? मतलब ये हुआ कि somatostatin जो है, अभी हम देखते हैं रिलीज कहाँ से होता है। somatostatin जो है वो गैस्ट्रिन रिलीज को कम करता है। इट्स मीन दैट कि अगर somatostatin का लेवल ज्यादा होगा तो वो गैस्ट्रिन के लेवल को कम कर देगा, जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज decrease histamine histamine release. ठीक है, as you people know that gastrin is going to be released from the antral G cells, from the antral G cells, and you people know that histamine is going to be released from ECL cells, enterochromaffin like cells, and both these chemicals, gastrin and histamine, are associated with HCl production or increases the level of HCl. Okay, kindly please switch off your mics. Hamza, mic off करो. Okay, the next is डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ एससीएल। क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ एससीएल। ओके, लिसन एंड रिमेंबर, this somatostatin this somatostatin is going to be released from antral D cells, from antral D cells. Let's suppose, for example, as you people know that here is stomach. Okay, somewhere here the antral D cells, antral D cells. Okay, okay, यहाँ पे कहीं पे suppose antral D cells. From here the somatostatin has been released here, and it will come over here on the different type of cells, and the name of cells are G cells and enterochromaffin like cells. Okay, as you people know that, let's suppose for example here is the G cells responsible for gastrin release, gastrin release. ओके, यहाँ से आया ये somatostatin, और इसने यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसने मौजूद अपने इसके जो रिसेप्टर होते हैं, जी प्रोटीन रिसेप्टर, उनके ज़रिए से इसने गैस्ट्रिन रिलीज को कम कर दिया। क्या किया? डिक्रीज गैस्ट्रिन रिलीज, बिकॉज इसके इसके जो रिसेप्टर होते हैं सोमैटोस्टैटिन के जी सेल्स के ऊपर, वो जी आई होते हैं। वो कौन से होते हैं? जी आई रिसेप्टर होते हैं इसके, राइट? ओके, जस्ट लाइक दिस, हेयर आर द ईसीएल सेल्स, हेयर आर द ईसीएल सेल्स और इंटरक्रोमेफिन लाइक सेल्स, उसके ऊपर भी इसके रिसेप्टर हैं, एंड दी रिसेप्टर आर जी आई और एस एस टी रिसेप्टर्स। ओके, देयर इज एनी क्वेश्चन टिल? नो, अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का? तो फिर हम आगे चलते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन?
Okay, next. So this is the first factor that is associated with the decrease of HCl production. ठीक है, आपको बताया गैस्ट्रिन और जो इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स हैं उनसे गैस्ट्रिन और हिस्टामिन रिस्पेक्टिवली रिलीज होती हैं जो कि एसिड प्रोडक्शन को कम करते हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव इनहिबिटरी इफेक्ट किसका है? सोमेटोस्टैटिन. इट्स मीन दैट व्हेन सोमेटोस्टैटिन लेवल गेट्स रेज्ड इट इज गोइंग टू decrease the level of gastrin and histamine from their respective cells like G cells and enterochromaffin like cells. Next, point number two. Point number two is prostaglandins. Point number two is prostaglandins. Okay, right? And here, there are two types of prostaglandins. Okay, prostaglandin E2 and prostaglandin I2. Prostaglandin E2 and prostaglandin I2. And what is the function of these prostaglandins? These prostaglandins are responsible for uh, increase the secretion of HCO3 नेगेटिव. ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं. As you people know that bicarbonate are the counter ions of HCl. Definitely, HCl is an acid and bicarbonates basic are basic in nature. So when there is acid and base reaction, definitely there is a neutralization reaction. HCl will be neutralized. ठीक है, तो अगर किसी वजह से बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन को हम बढ़ा दें या ज्यादा हो जाए बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन, तो क्या होगा? HCl की वो जो presence है उसको हम नलीफाई कर सकते हैं. We can nullify the HCl presence over there by increasing the production of the bicarbonate ions. Okay. Next is increase increase mucus production. Mucus mucus production. Okay, right. अब क्या होता है? लिसन, अब क्या होता है? Suppose we can say that this is your stomach. Okay. एंड यू पीपल नो दैट एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं वो क्या होती हैं? जो भी कोई सेल होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं. क्या होता है? कोई भी सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इट इज एनी सेल ऑफ द स्टमक. ठीक है, इज एनी अदर सेल एंड फ्रॉम हियर देयर आर lipids and especially the phospholipids, especially the phospholipids in the cell membrane. Okay, in the cell membrane, the phospholipids are going to be broken down into their constituents, and one of the constituent is prostaglandins. Okay, right? Prostaglandins बन चुके हैं यहाँ पे. और इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की दो टाइप्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2. राइट. ओके, अब क्या होगा? नो, ये हमारे पास parietal cells हैं. राइट. इन parietal cells के ऊपर, नो हियर ऑन these parietal cells, listen and remember very important point. Let's suppose here is the receptor. Okay, and the name for receptor is EP3 receptor. राइट. जिस तरह डिफरेंट केमिकल के रिसेप्टर होते हैं उसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो रिसेप्टर होते हैं उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं. फॉर एग्जांपल EP1, EP4, EP3, EP2, एक्सेट्रा. सो इन केस ऑफ स्टमक देयर आर EP3 receptor present on the parietal cells, and these EP3 receptor are going to decrease HCl production, and these receptor are G inhibitory in nature. So if they are G inhibitory, they are going to decrease the adenylyl cyclase, and adenylyl cyclase level will be low, or definitely decrease cyclic AMP level and decrease pKa level. And definitely this pKa, in the previous lecture, I told you people here this pKa is going to increase the insertion of these hydrogen potassium pump into the uh, luminal side. So when this pKa will be inhibited by prostaglandins, right? EP3 receptor 1 will be
activated by prostaglandins E2 and I2. So there is decrease pKa level. So when there is pK less or the low pKa level, then there is less phosphorylation of those vesicular hydrogen potassium pump. So when there is less phosphorylation, there is less insertion of that pump into the luminal side. So right, this is the luminal side. Luminal side. So when there is less insertion of these pumps in the layer, there will be less production of HCl, and it is because of prostaglandins. Okay, अब ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, प्रोस्टाग्लैंडिन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, and mucus production. So this is the mechanism how prostaglandins are going to counter the HCl production, or how uh, prostaglandins are going to neutralize the HCl function or nullify HCl function. ओके, दो मैकेनिज्म है, ठीक है, एक तो, बल्कि तीन मैकेनिज्म है, बल्कि तीन मैकेनिज्म है, डिक्रीज HCl प्रोडक्शन, राइट, तीन मैकेनिज्म, ठीक है। एक तो ये है कि इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, जितने बाइकार्बोनेट आयंस ज़्यादा होंगे उतने HCl के साथ वो रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, HCl नलिफाई होगा। दूसरा, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। ओके, अच्छा, ये म्यूकस क्या होता है बेसिकली? म्यूकस इज बेसिकली हाइड्रोफोबिक ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक ग्लाइकोप्रोटीन्स, and these hydrophobic glycoproteins are going to form a layer uh, around the whole स्टमक वॉल, ठीक है। जो स्टमक की वॉल होती है उस पूरे को ये क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, ताकि HCl जहाँ जहाँ भी होगा वो उसको, या ना वो प्रोटेक्ट करेगा HCl से। क्या? म्यूकस। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, ये HCl ये है ना स्टमक, लेट्स सपोज, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये म्यूकस होता है ये इस तरह जो स्टमक की वॉल्स होती है उसके ऊपर जो है ना लेयर बना लेते हैं इस तरह करके, जस्ट लाइक दिस, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द HCl डाइजेशन, ठीक है, right? Okay. So this is the role of somatostatin and prostaglandin in the neutralization of HCl. Means that these are the protective mechanisms. We are going to protect the stomach from damage of HCl released by the parietal cells. Okay, एक और चीज़ है। अब ये तो listen. Uh, as you people remember in our first lecture of physiology, in which I told you people the epithelial cells, and you people know that epithelial cells are responsible for secretion and absorption of different chemicals. Okay, so these are those epithelial cells. Just those epithelial cells. Epithelial cells, or we can say that surface or superficial or surface epithelial cells. Means that these cells are present on the outer surface, ठीक है। outer surface means के कुछ सेल्स होते हैं ना जो अंदर होते हैं डीप, ठीक है, और कुछ होते हैं सेल्स सरफेस सरफेस के ऊपर इस तरह, तो ये उनमें से है, ठीक है। ये क्या करते हैं? These cells are also associated with mucus, mucus production, mucus production, and increases HCO3 negative excretions. Okay, right? Okay, listen. एक और चीज, listen and remember. In case of prostaglandins, prostaglandins have another effect, that is increase blood flow, increase blood flow towards stomach. जो ब्लड वेसल स्टमक को ब्लड सप्लाई कर रही होती है ये उनकी तरफ ब्लड को बढ़ा देती हैं। फिर क्या होता है, आपको पता है ना, HCl बन गया। अब क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना HCl जो है ना वो वेनस सिस्टम के जरिए ड्रेन भी हो जाता है, वहां से निकल भी जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा ड्रेन होगा क्या, HCl, और उसकी जो है ना वहां से रिमूवल होती है। और दूसरा ये है कि जो ज्यादा ब्लड फ्लो होता है ये बाइकार्बोनेट आयंस को भी अपने अंदर लेकर आता है। एज यू पीपल नो दैट हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, दो आर कमिंग फ्रॉम द RBCs, याद है वो क्लोराइड और शंट वाला पाथवे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है।
ठीक है, कि कुछ जो है वो आपकी CO2 की जो ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होती है, कुछ बाइकार्बोनेट आयंस ब्लड में भी होती हैं डेफिनेटली। सम ऑफ द बाइकार्बोनेट्स आर देयर व्हेन देयर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो टुवर्ड्स दिस stomach area. So definitely when there is more and more blood, then there is more and more bicarbonates ion secretions there because of prostaglandins. So there is a lot of role here regarding prostaglandins, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि HCl की प्रोडक्शन और उसके जो प्रोडक्टिव मैकेनिज्म है उनके अंदर एक बैलेंस होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी, इन नॉर्मल फिजियोलॉजी देयर इज अ बैलेंस बिटवीन the HCl production and its neutralization. So from one of these two mechanics, either HCl production becomes increase or there is less protective mechanics, ठीक है। अगर क्या होता है कि आपकी HCl की प्रोडक्शन बढ़ जाती है या आपके जो प्रोडक्टिव मैकेनिज्म है वो काम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको अल्सर हो सकता है, ठीक है। अब अल्सर है क्या, इसको अब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी जब हम स्टार्ट करेंगे, टुमारो वी विल डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्सर, ठीक है। अभी हमने ये थोड़ा बहुत इसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस किया अभी तक टिल। अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताए। इज देयर एनी क्वेश्चन? अभी हमने ये बातें नहीं पढ़ी हुई थी, अब हमने ये नई बातें पढ़ी हैं। एसिड की प्रोडक्शन हमने पहले पढ़ी हुई थी। इज देयर एनी क्वेश्चन? वो पीपल कैन आस्क, अदरवाइज द लेक्चर इज ओवर। इज देयर एनी क्वेश्चन? Okay, today we are going to discuss the pathophysiology of ulcer, because we have discussed the normal physiological uh, functioning of stomach and how acid is going to produce, what are the factors responsible for enhanced secretion of HCl, and what are the factors that are going to protect the excessive secretions of the HCl, or they are going to counter the HCl secretions. Okay, now we will discuss the pathophysiology, or the factors those are going to be the pure cause of ulcer. Okay, right? Pure cause of ulcer. Okay. Uh, Pathophysiology of peptic peptic ulcer disease. Okay, right. First, we will define what is ulcer. Okay, what is ulcer? Peptic ulcer. Peptic ulcer is a break or damage. Is a break or damage. Damage in the lining of in the lining of stomach or duodenum. Duodenum. Okay. uh, Now we can say that there are two type of ulcer: stomach ulcer or duodenal ulcer, or we can say that uh, gastric ulcer or duodenal ulcer. Okay. So this is the definition of ulcer, right? The next is which type of layers, or which layers of gastrointestinal tract are going to be damaged by uh, the hypersecretion of HCl. ठीक है। अल्सर कब होता है? When there is occurrence of ulcer, when there is hypersecretion of HCl, because you know HCl is an acid. When there will be acid, it will go and damage the cell. Okay, यहाँ पे भी होगा, ये सेल को डैमेज करेगा। कोई भी एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो HCl है, जो कि या तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, या तो इसमें जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थे हमारे, दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, अगर वो काम हो जाएंगे तो ये डैमेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो जो डैमेज है वो क्या किस किस चीज़ को ये कौन कौन सी लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो इन फिजियोलॉजी आई taught you people different layers of gastrointestinal tract, that I am just going to write those layers. The first one is mucosa. Mucosa, right? This layers can be damaged by the hypersecretion of HCl. The other one is muscularis. Muscularis. The other one is submucosa.
mucosa. Other layers that you people know, serous and other type of layers can also be damaged, but these three layers are more prone to the hypersecretion of the axial damage. Okay. ओके। अच्छा, अब जब ये हमें अल्सर होता है तो उसकी कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं, ठीक है, सिम्टम्स। सिम्टम्स कौन कौन सी उसकी। दिस इज एसोसिएटेड विद पेन, पेन, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स destruction or the destruction of gastric or duodenal cells. Perforation, perforation, perforation. Do people know what is perforation? Perforation mean uh, holes, holes in the GIT wall. So these are the symptoms of the peptic ulcer. Okay. Now I am going to discuss the factors, okay, of ulcer. So for example, this is there might be one cell of stomach, right? Okay. Factors of factors of peptic ulcer. Or you people can say that risk factors. Risk factors. Okay. There are different factors. Those are associated with the ulcer, like H. pylori induced ulcer. Today I will discuss H. pylori induced ulcer. What is H. pylori? What is the role of H. pylori in the occurrence of ulcer? Okay. Then I will discuss NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs induced ulcer. Okay. And then there are different other factors that are associated with the ulcer. These are two main factors, right? Today we will discuss H. pylori induced ulcer. H. pylori means Helicobacter H. pylori. Helicobacter, Helicobacter pylori. Okay, right. Can anybody tell me what is this? What is H. pylori or Helicobacter H. pylori? What is this? Bacteria. Yes, right. ओके, ये हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी है क्या चीज। हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी, सॉरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और एच पाइलोरी, सॉरी, एच पाइलोरी, एच पाइलोरी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में। ओके, व्हाट इज दिस बेसिकली, दिस इज ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव spiral shaped bacteria, spiral shaped bacteria. Okay, right. And it is one of the most uh, we can say important cause of ulcer. Okay, most important in ulcer, right. ओके, एज यू पीपल नो दैट कि अब सब लोगों को पता है कि जो हमारा स्टमक होता है उसका इन्वायरमेंट किस किस्म का होता है, उसका इन्वायरमेंट किस किस्म का होता है, एसिडिक और बेसिक। यू पीपल हैव टू टेल मी, एसिडिक और बेसिक। Acidic, sir. एसिडिक, एग्जैक्टली, एसिडिक इन्वायरमेंट, राइट। तो जो एच पाइलोरी है ना, ये इसके अंदर एबिलिटी होती है
इस एच पाइलोरी के अंदर, कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकता है। किस तरह इसके अंदर एबिलिटी होती है? यू पीपल कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, सर, व्हाई ओनली एच पाइलोरी इज एसोसिएटेड विद द अल्सर, व्हाई नॉट अदर बैक्टीरिया? सो आई विल डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन, ओके, कि एच पाइलोरी ही क्यों है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, राइट? ओके, 1 मिनट। ओके, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, this is your H pylori, this is H pylori bacteria. Normally it enters into the gastrointestinal tract through uh, oral route, okay, oral route के जरिए ये enter होता है किधर? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। दिस इज H pylori, right? Okay, and let's suppose this bacteria now has reached into your stomach, correct? And we people know that the environment of stomach is acid, means that there is excess of hydrogen ions, right? I suppose this is the area where is the pH is very low, means uh, there is an excess of hydrogen ions, right? And now this H pylori has reached into the stomach stomach area, right? Okay, there is an important property, and listen and remember, it's very important. Listen and remember, this H pylori is uh, very unique in its one character, that it has ability to release an enzyme. Listen and remember, release an enzyme, and the name of enzyme is uh, urease enzyme, urease, urease. Okay, right? This is an enzyme which is basically secreted by H pylori, Helicobacter H pylori, right? And what is the function of this urease? ये जो यूरियाज होता है ना, ये क्या करता है? ये आपकी जो यूरिया होती है, यूरिया, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया के अंदर। किसके अंदर? अमोनिया, NH3, अमोनिया, NH3, ठीक है। एंड यू पीपल नो दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ अमोनिया? व्हाट इज द नेचर ऑफ अमोनिया? अमोनिया की नेचर क्या होती है? एसिडिक और बेसिक? एसिडिक और बेसिक, बेसिक। यस एग्जैक्टली। अब क्या करेगी ये अमोनिया? क्या करती है? व्हाट दिस अमोनिया इज बेसिकली गोइंग टू डू, अब क्या होगा? ये अमोनिया रिएक्ट करेगी किसके साथ? इन हाइड्रोजन आयन के साथ। क्या करेगी? it will react with these hydrogen ions. Definitely there will be the formation of which ion? Which ion? क्या अमोनियम बनेगा? आयन। यस, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, राइट? अब क्या होता है? अब ये देखो, ये इन्वायरमेंट जो है ना, ये इसको बेसिक बना रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है। फिर उसके साथ क्या होता है? ये जो अमोनिया होता है, अमोनियम आयन, ये अमोनिया ऊपर वाला है, ये अमोनिया है, और नीचे वाला क्या है? अमोनियम आयन है, ठीक है। ये क्या करता है ना, दिस अमोनियम आयन देन गेट्स अटैच्ड विद हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। Listen and remember, always in physiology and in pharmacology there is no absoluteness. कोई भी तकमील नहीं होती फार्माकोलॉजी के अंदर और फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। एंड यू पीपल नो थिंक दैट सर, फ्रॉम वेयर दिस हाइड्रोक्सिल इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है, बिकॉज वी आर इन द स्टमक एंड हियर इज द एक्सेस ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। तो हमेशा इस तरह नहीं होता कि जिस जगह पे हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे वहां पे हाइड्रोक्सिल नहीं होंगे। नो डाउट कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की बादशाहत है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। जब भी हम फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी में कोई चीज रिलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ द अदर थिंग्स, ठीक है, दूसरी चीजें भी यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पे 90%, लिसन, यहाँ पे 90% हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है, और बाकी कुछ हमारे पास 10% हाइड्रोक्सिल आयंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह एज वी से दैट द pH of stomach is acidic, while when we discuss the pH of the intestine is relatively basic, means कि वहाँ पे बेसिक कंटेंट ज्यादा है, एसिडिक कम है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे दूसरा जो अपोजिट इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूरियस जो कि प्रोड्यूस हुआ एच पाइलोरी से, उसने क्या किया? उसने यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट किया। अमोनिया हाइड्रोजन आयंस की वजह से क्या अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हुई। दिस अमोनियम आयन इज now react with hydroxyl and forms ammonium hydroxide, NH4OH,
ठीक है, अब ये क्या होता है, बिकॉज द आयन इज वेरी अनस्टेबल, डेफिनेटली इट विल ट्राई टू मेक इट स्टेबल, सो इट विल रिएक्ट विद इट्स अपोजिट आयन एंड मेक अ बेसिक इन्वायरमेंट, एंड मेक बेसिक इन्वायरमेंट। अब ये क्या होता है, अब ये जो बेसिक इन्वायरमेंट बना है, ये अमोनियम आयंस की वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अब क्या करेगा, ये जो हमारा H पाइलोरी है ये उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इर्रिगेट इसको। ठीक है, अभी मैंने कहा था दिस H pylori has ability to survive in the acidic environment. Why? This is the reason, because it has ability to make its surrounding environment basic and it can retain its integrity while there. Right? Is there any question till now? यहाँ तक सबको समझ आ गई है जो मैं कहना चाहता हूँ, अब ये यहाँ पे सर्वाइव करेगा, राइट? इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो सर। मैंने ये कहा है कि बिकॉज नाउ द इन्वायरमेंट ऑफ the stomach is going to be a little bit basic, ठीक है, नॉट होल द environment is going to be basic। जिस जगह पे H पाइलोरी होगा, जिस एरिया के अंदर, मतलब के पैचेस में, तो वो उस एरिया के अंदर ये जो है ना यूरिएज को रिलीज करेगा, यूरिएज देन विल कन्वर्ट यूरिया इनटू अमोनिया, अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस, द अमोनियम आयंस विल be going to make ammonium hydroxide। Now this ammonium hydroxide is a base and it will try to wrap up this H pylori, and now H pylori will survive in very हॉट एंड बर्निंग इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक। ठीक है, जब ये इसको क्या करेगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या आ गया, बेसिक इन्वायरमेंट बन गया, तो ये अब एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, राइट? अब ये डिफरेंट अपने केमिकल्स को रिलीज करता रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारा स्टमक जो है ना वो डैमेज होगा। अब वो किस तरह डैमेज होगा, नो लिसन। ओके, इतनी स्टोरी आगे समझ, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, अब आगे सुनो, आगे क्या होगा, ये जो ये जो यूरिएज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये यूरिएज, उसके अलावा ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ है NH4OH, ये ठीक है, ये यूरिएज जो है ये भी एंटीजन के तौर पे काम करता है, एंटीजन। ठीक है, ये एंटीजन के तौर पे काम करेगा, यहाँ पे इम्यून सिस्टम ऑन हो जाएगा, इम्यून सिस्टम। ठीक है, लाइक एज यू पीपल हैव ऑलरेडी टोल्ड बाय मी इन क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे एंटीजन होती है वहाँ पे इम्यून सिस्टम आके क्या करता है, वहाँ पे कीमोकाइंस, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, साइटोकाइंस साइटोकाइंस को रिलीज करता है, कीमोकाइंस को रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करते हैं, एंड दीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जैसे हमने वो एथेरोसाइक्लोसिस के केस में देखा था, राइट? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय दिस यूरियस एंजाइम, राइट? ओके, नाउ व्हाट दिस ammonium hydroxide is going to do, it is going to damage, the epithelial cells, epithelial cells। Definitely, you people know that epithelial cells that we have just we discussed. Sorry, we discussed in the previous lecture regarding the epithelial cells. You know, epithelial cells are responsible for the production of the bicarbonate ions and some mucus as well. So when these cells will be damaged, definitely there will be reduction in the bicarbonate ions and mucus production. Definitely. So when mucus production will be reduced, when there will be the low bicarbonate ions, definitely the protective mechanism of the stomach will be disturbed. There will be imbalance between acid production and protective mechanisms. Right? Okay. तो इससे क्या होता है, हमारा स्टमक डैमेज होता है। थर्ड फैक्टर, देयर इज एन अदर फैक्टर, दैट इज लाइपोपोलिसैकेराइड्स, दैट इज लाइपोपोलिसैकेराइड्स। ठीक है, ये जो लाइपोपोलिसैकेराइड है, इट एक्ट्स एज एन एंडोटॉक्सिन ऑफ द एच पाइलोरी, एक्ट्स एज एंडो सॉरी एंडोटॉक्सिन। This endotoxin is again going to be acts as antigen, and same this kind of response. So definitely there will be the injury of the cell, there will be the perforation in the GIT wall, right? इम्यून सिस्टम की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ओके, राइट? अच्छा, अब कुछ अदर पॉइंट सुन लो। अब क्या हुआ, जो NH4OH बना था, NH4OH, ये क्या कर रहा है, पीएच को क्या कर रहा है, लो कर रहा है। ठीक है, जब पीएच लो होगी तो क्या होगा, गैस्ट्रिक जो जी सेल्स होंगे, गैस्ट्रिक जी सेल्स, वो कहेंगे व्हाट इज हैपनिंग, जी सेल्स, व्हाई द पीएच ऑफ द स्टमक इज गोइंग टू बी रेज्ड, बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड
जो कि थोड़ा सा बैक्टीरिया के इर्द गिर्द होता है, वो पीएच को ऊपर लेके जाता है। जब पीएच को ऊपर लेके जाता है, रिमेंबर दैट होम्योस्टेसिस, बॉडी अपने एनवायरमेंट को उसी तरह का रखना चाहती है, लेकिन एनवायरमेंट तो चेंज हो रहा है, वो तो बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व हो गया। बॉडी अपने आप को सेम रखने के लिए क्या करेगी, जी सेल ऑन हो जाएंगे, जी सेल क्या करेंगे, गैस्ट्रिन को रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिन को, और गैस्ट्रिन फिर क्या करेगा, एचसीएल की प्रोडक्शन फिर बढ़ा देगा। तो फिर एचसीएल के ऊपर से डैमेज है पहले, ऑलरेडी देयर इज अ डैमेज, ठीक है। अब जी सेल को नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, जी सेल ने तो अपना एचसीएल की प्रोडक्शन को पूरा करना है, और उस जो है ना को पूरा करने के लिए एचसीएल रिलीज करेगा। अब जी सेल को तो नहीं पता कि यहाँ पे एच पाइलोरी आया हुआ है, तो वो भी इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो अपना काम करेगा, जिसकी वजह से फिर एचसीएल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो ज्यादा डैमेज करेगा, ठीक है। दिस इज एन अदर पॉइंट, राइट। सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो पीएच को लोअर कैसे कर रहा है, इंक्रीज नहीं करना चाहिए उसे? सो मैंने कहा इंक्रीज, मैंने लोअर तो नहीं कहा, आई सेड इंक्रीज, आई सेड इंक्रीज, आई सेड ओके। इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज होगी, ठीक है। जब इंक्रीज होगी पीएच, तो अब स्टमक ने तो अपनी पीएच को लो रखना है, तो उसको काउंटर करने के लिए फिर जी सेल ऑन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। तो एक चीज जो है ना वो ज्यादा होने लगती है, तो उसको फिर काम करने के लिए फिर चीज रिलीज हो जाती है, सही, राइट, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो एच पाइलोरी है, एच पाइलोरी, एच पाइलोरी, एच पाइलोरी हैज एबिलिटी टू डैमेज एंट्रल एंट्रल D cells, ठीक है। And you people know that D cells are associated with the release of SST. SST means somatostatin, and this somatostatin is associated with the reduction of gastrin, because as you people know that the somatostatin decreases the gastrin release. तो जब H pylori की वजह से D cells भी डैमेज हो जाएंगे, तो गैस्ट्रिन के ऊपर जो somatostatin का इनहिबिटरी चेक था, दैट विल डेफिनेटली विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज वी नो इन द नॉर्मल फिजियोलॉजी डी सेल्स आर गोइंग टू इनहिबिट द गैस्ट्रिन रिलीज, दैट इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, नो हियर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इज आल्सो गोइंग टू बी डिस्टर्ब, ठीक है। तो क्या होगा, तो गैस्ट्रिन का जो चेक है वो भी खत्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से, इससे क्या होगा, एचसीएल की जो प्रोडक्शन है ना वो जिसको हम कह सकते हैं कि बढ़ जाएगी, ठीक है, ये प्रमोट होगी, और एचसीएल प्रोडक्शन विल बी प्रमोटेड बिकॉज ऑल द इनहिबिटरी प्रोसेसेस goes down, right? So this is how the H. pylori is going to disturb the protective mechanism of HCl, sorry, protective mechanism of stomach, right? तो फिर जिससे क्या होगा, HCl की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो फिर डैमेज करता है किसको, जीआईटी सेल और म्यूकोसा को। Is there any question till now? I am going to wrap up it again. Ulcer is basically, peptic ulcer is a break or damage in the lining of the stomach or duodenum. It can damage the mucosa muscularis and submucosa. Symptoms क्या हो सकती हैं, पेन हो सकती है, ब्लीडिंग, obstruction और perforation means hose formation. Factor of the peptic ulcer, right? What are those risk factors? The first risk factor is the Helicobacter pylori or H. pylori. It is gram-negative spiral shell bacteria, most important cause of ulcer, right? This is H. pylori. When it goes into the stomach, it start releasing an enzyme that is urease. This urease is going to convert urea into ammonia. Ammonia will convert into ammonium ions. Ammonium ions will react with the hydroxide and make ammonium hydroxide. This is going to wrap by H. pylori and prevents it from the acidic content of stomach, right? And make it survive there. किसको, H. pylori को। अब ये जो यूरियज है, ये भी एंटीजन के तौर पे काम करता है, वहाँ पे इम्यून सिस्टम को ऑन करता है, इम्यून सिस्टम भी क्या करता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। अल्सर के अंदर एक तो परफोरेशन है, फिर इन्फ्लेमेशन। आपको पता है वेयर देयर विल बी द बैक्टीरिया देयर विल बी इन्फ्लेमेशन, बिकॉज इट इज एन एंटीजन, एंड वेयर विल बी द एंटीजन देयर विल बी एन इन्फ्लेमेशन, बिकॉज इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। व्हेन इम्यून सिस्टम इज देयर, डेफिनेटली देयर इज प्रॉब्लम आउट देयर। This ammonium hydroxide is going to damage epithelial cells. Those are associated with the protective mechanism of the GIT, lipopolysaccharide, endotoxins, acts as antigen, inflammatory response generate करते हैं। फिर उसके बाद जो है, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, ये पीएच को ऊपर करता है, तो उसको अगेन लोअर करने के लिए जो है ना, जी सेल जो है ना वो गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, जिसकी फिर एसिड की प्रोडक्शन होती है। एसिड की जितनी अब प्रोडक्शन दोबारा इरेगुलर होगी, तो उससे क्या होगा, डैमेज, अल्सर, परफोरेशन, obstruction, bleeding, pain, etc. H. pylori can again damage the D cells of the antrum, and these cells are associated with the production of the somatostatin. And when there is no somatostatin is there, there will be less inhibitory check on the gastrin. Gastrin level will be enhanced. Gastrin is again going to increase the production of the H cells. So in this way, H. pylori is responsible for the occurrence of ulcer. Is there any question? सर ये जो एच पाइलोरी है, ये सिर्फ स्टमक को अफेक्ट करेगा, ड्यूटीनम को नहीं करेगा? नहीं, duodenum को भी करेगा। It is associated both with duodenum and gastric both, right? ड्यूटीनम को भी इसी Okay.
Today we are going to discuss the rest of the risk factors of ulcer, and uh, one of those is acid-induced ulcer. First one is acid-induced ulcer. NSAIDs. I think you people are familiar with this term. NSAID means non-steroidal, non-steroidal, steroidal, anti-inflammatory, anti-inflammatory drugs. Inshallah, we will later on discuss what are these drugs. As you people already know, like borin, diclofenac, ठीक है, पोटाशियम, पायरोक्सिकैम, मेलोक्सिकैम, एक्सेट्रा, ये क्या है? ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ये इनके नाम है, ठीक है। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इंड्यूस्ड अल्सर. First, let me to briefly explain the role of NSAIDs here. Okay, what basically happens is, let's suppose, for example, this is one of the portion of stomach cell membrane. This is one of the portion of stomach cell membrane. This one, right? This one. And you people know that in any cell membrane of the cell, it contains some kind of phospholipids in it. Phospholipids, phospholipids, right? Okay. No, due to any stimulus, these phospholipids are converted into arachidonic acid. I will write here arachidonic acid, double A, arachidonic acid, right? And here is an enzyme. Listen and remember. As you people already have studied an enzyme responsible for PIP2 breakdown, right? Phospholipase C beta, right? आप लोगों को आता है ना phospholipase C beta. Just like that, here is an enzyme that is known as phospholipase A2. ठीक है? This is a similar kind of enzyme responsible for conversion of phospholipids into arachidonic acid, right? And after that, this arachidonic acid in the cell membrane is converted into different metabolites, and one of those metabolites are prostaglandin PGs. I will write prostaglandin, okay? And the second one are leukotrienes. Okay? And the enzyme here, which is responsible for conversion of arachidonic acid into prostaglandin, is cyclooxygenase here. Cyclooxygenase, right? And there are three types of cyclooxygenase: cyclooxygenase 1, cyclooxygenase 2, and cyclooxygenase 3. Cyclooxygenase 3 is very little known. इसके बारे में बहुत कम पता है. But cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2 are well known, right? So cyclooxygenase 1, and we can also write it as COX-1. COX means cyclooxygenase 1, right? And the second enzyme here is COX-2, right? Listen it again. Phospholipase A2, arachidonic acid. Then this arachidonic acid is converted into prostaglandins, right? And these prostaglandins, and one of those prostaglandins we have already studied in our previous lecture. In case of GIT, we have studied prostaglandin E2 and prostaglandin I2. And you people know that these prostaglandins, like for example, in case of stomach, these two prostaglandins are associated with, as you all people already know it, decrease HCl excretion, right? Decrease HCl. I am just briefing you people. There is a lot behind the prostaglandins and their synthesis and their breakdown, etc. But I am just here pointing towards our point, that is acid-induced ulcer, right? Decrease HCl excretion. Other one is increase HCO3 negative ion excretions, and the third point is increase blood flow. And all the three points are going to promote the less secretion of HCl, right? Blood flow. ओके, यहाँ तक ये अब देखो, ये हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ ली. फॉस्फोलिपिड्स था, एराकिडोनिक एसिड था, साइक्लोऑक्सीजनेस था, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ओके, राइट? अब
ये जो एंसिड्स हैं ये क्या करते हैं बेसिकली, दीज एंसिड्स कम्स एंड आर गोइंग टू इनहिबिट द कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, राइट। अब क्या होगा, देखो एनसेड्स क्या करते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये कॉक्स को इनहिबिट करते हैं। अगर हम आप में से कोई भी बंदा अगर उसको कोई पेन हो रही है और वो क्या करता है, वो डिक्लोफेनेक सोडियम ले लेता है, तो डिक्लोफेनेक जाएगा आपके स्टमक में, वहाँ पे मौजूद कॉक्स को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी तो एसिड की सिक्रीशन कम हो जाएगी, बाइकार्बोनेट्स सॉरी एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, सॉरी एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कम हो जाएगी और ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एसिड डोमिनेट कर जाएगा, एसिड की जो सिक्रीशन हो रही है वो क्या हो जाएगी, डोमिनेट हो जाएंगे। And listen here, listen. In case of stomach, only cyclooxygenase 1 is responsible for prostaglandin synthesis. Cyclooxygenase 2 is not there. Listen and remember. The COX-1 enzyme is constitutively present in our body. What is meant by this constitutively? Constitutively means it is present by birth in our body and it performs certain physiological function in our body, right? And as you people can see here, one of the example is prostaglandin synthesis in the stomach wall to counter or to nullify the effect of acid, right? कॉक्स वन और कॉक्स टू, ठीक है। तो ये कॉक्स वन जो है ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एंड कॉक्स टू, मैं इधर लिख देता हूँ, कॉक्स वन फिजियोलॉजी को रन करता है, कॉक्स टू क्या करता है, पैथोफिजियोलॉजी को रन करता है, एंड इट इज इंड्यूसिबल, लिसन, एंड इट इज इंड्यूसिबल मीन्स if there is an inflammation or there is something wrong with the normal physiology, then COX2 comes and it performs its role, pathophysiology, right? ठीक है। तो ये इस तरह क्या होता है, एनसिड्स ये क्या करते हैं, कॉक्स की इनहिबिशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सेंसेस कम हो जाती है, एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाती है, बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कम हो जाती है और ब्लड फ्लो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स, कॉक्स 1 इनहिबिटर्स, कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। तो इट्स मीन्स दैट कि वी कैन यूज कॉक्स 2 ड्रग्स इफ समबडी इज हैविंग अल्सर, ठीक है, क्योंकि कॉक्स टू तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो वाली ड्रग्स कॉक्स टू को तो इनहिबिट ही नहीं करेंगी, ठीक है, जिस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होती रहेगी और हमारे जो हमें जो पेन रिलीविंग इफेक्ट है वो उस कॉक्स की वजह से मिल जाएगा, ठीक है। जो ड्रग्स कॉक्स वन कॉक्स टू दोनों को इनहिबिट करती है उनको नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है, और जो कॉक्स टू को सिर्फ इनहिबिट करती है उनको हम कॉक्स टू सिलेक्टिव इनहिबिटर्स कहते हैं, ठीक है, और उनको हम कॉक्सिब्स कहते हैं, उनका क्या नाम होता है, कॉक्सिब्स, राइट। तो इस तरह दिस इज वन मैकेनिज्म, लिसन, दिस इज द वन मैकेनिज्म ऑफ एसिड इंड्यूस्ड अल्सर। नेक्स्ट वन, सेकंड मैकेनिज्म। सर ये कॉक्स 2 वाली बात दोबारा रिपीट करते हैं Okay, प्लीज। okay, okay, okay. I'm just going to repeat it again. Listen. मैं ये कह रहा था कि देखो, अभी मैंने कहा है ना कि कॉक्स वन जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व है, कॉक्स टू जो है दैट इज इन्वॉल्व इन द पैथोफिजियोलॉजी एंड इट इज इंड्यूसिबल, मींस whenever there is an inflammation or there is something wrong with the normal physiology or somebody is coming from outside like antigen, then this COX2 uh, becomes active or it becomes inducible, मीन्स दैट कि ये इसकी यहाँ पे जो है ना जनरेशन हो जाती है खुद ही। बट मैंने कहा है कॉक्स वन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली प्रेजेंट इन द नॉर्मल फिजियोलॉजी, या ये ऑलरेडी मौजूद होता है जो कि नॉर्मल प्रोसेस को चला रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा, नॉर्मल प्रोसेस को चला रहा होता है, और जो कॉक्स टू है ना ये जो है ये पैथोलॉजी में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में भी कहीं कहीं इन्वॉल्व हो सकता है, जिस तरह ब्लड वेसल में कुछ रोल है इसका नॉर्मली, ठीक है, और ये सीजनस के अंदर भी इसका कुछ रोल होता है। जब आप कहते हो ना कि मैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कोई एनाल्जेसिक खा लूँ, तो बेसिकली कॉक्स टू को इनहिबिट करता है ब्रेन में जाके, जिसकी वजह से आपकी पेन काम होती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये फर्क समझा रहा था कि जो कॉक्स वन इनहिबिटर्स हैं हम उनको उन पेशेंट में यूज नहीं करेंगे जिनको ऑलरेडी अल्सर है, ठीक है, या उसको शिकायत है अल्सर की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर कॉक्स टू इनहिबिटर देंगे, ठीक है, उसको पेन रिलीविंग के लिए, क्योंकि कॉक्स टू का तो यहाँ पे रोल ही नहीं है स्टमक के अंदर, स्टमक में तो कॉक्स वन का रोल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट। तो फिर क्या होगा कि हम कॉक्स टू इनहिबिटर्स यूज करेंगे, सही है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो मैं बाद में एंड पे लेता हूँ आप लोगों का क्वेश्चन, अभी हम आगे चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म, राइट। ओके, द सेकंड मैकेनिज्म इज दैट ये जो एनसिड्स होते हैं ना, एनसिड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये क्या होती हैं, ये आपके स्टमक के अंदर ना कुछ मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करवाती हैं, ठीक है, और उन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स, क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स, ओके। तो ये क्या करते हैं, दीज इंटरसेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स, राइट। फिर क्या होता है, ये न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करवाते हैं, जिस तरह प्रोटीएसिस,
proteases, right? And some other enzymes, right? Okay, 1 minute. 1 minute. And and free radicals, ठीक है। तो आपको पता है फ्री रेडिकल जो होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे आर गोइंग टू डैमेज योर सेल्स। तो फिर क्या होता है, इससे आपको क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन एंड सेल डैमेज, राइट। So this is the role of NSAIDs in the induction of ulcer, right? Next point is, I'm going to finish the pathophysiology. The next point is hypersecretion of HCl, hypersecretions of ulcer, sorry, hypersecretion of HCl, ठीक है। क्या होता है, एक डिजीज है, डिजीज, उसको हम कहते हैं जुलिंगर एलिसन, जुलिंगर जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एचसीएल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्यों? कि जो गैस्ट्रिन रिलीजिंग सेल्स होते हैं ना, गैस्ट्रिन रिलीजिंग सेल्स, गैस्ट्रिन रिलीजिंग सेल्स उनके अंदर ना ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर, there is tumor formation in those gastrin releasing cells, ठीक है। like you people can imagine when there is a tumor means there is bunch of cells, there are bunch of abnormal cells, so those cells also going to secrete the gastrin which is in excess, ठीक है। देखो ना, कैंसर सेल में जब कैंसर होता है तो क्या होता है, एक सेल से एबनॉर्मल सेल बन जाता है, मीन सेल डेंसिटी बढ़ जाती है। जब सेल डेंसिटी बढ़ती है तो वहां से जो होने वाली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है, सही है, समझिए। तो इस वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एचसीएल का लेवल भी क्या होता है, बढ़ जाता है इन केस ऑफ जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हाइपरसिक्रेशन होती है। फिर एक और डिजीज है, उसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, उसको क्या कहते हैं, कुशिंग अल्सर और कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग अल्सर, राइट। ये भी आप लोगों ने गौर से देखना है। इसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई ट्रॉमा लग जाए, ब्रेन ट्रॉमा, ट्रॉमा किसका, स्पेशली ब्रेन का, ठीक है। अगर आपको, आप जा रहे थे कहीं पे, ठीक है, आप गिरे, आपको सर की चोट लगी, आपका ब्रेन डैमेज हो गया, तो फिर क्या होता है जब ब्रेन डैमेज होता है ना बंदे का ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या होता है वहां पे आपकी ब्रेन न्यूरो ट्रांसमिशन डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाता है, ब्रेन ब्रेन न्यूरो ट्रांसमिशन, न्यूरो ट्रांसमिशन डिस्टर्ब, राइट, ठीक है। तो फिर क्या होता है जब वो इनबैलेंस होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, कोलिनर्जिक कोलिनर्जिक फ्लो जो होता है, या वी कैन से दैट द कोलिनर्जिक नर्व इंपल्स जनरेशन, क्या है, कोलिनर्जिक नर्व इंपल्स जनरेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, नर्व इंपल्स जनरेशन, राइट, ठीक है। फिर क्या होता है, आपकी जो है ना एसिटाइलकोलिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, राइट। क्या होता है, एसिटाइलकोलिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, यू पीपल नो दैट इन केस ऑफ एसिटाइलकोलिन योर एचसीएल सिक्रीशन आर गोइंग टू इंक्रीज, and HCl secretion rest, right? So this is the hypersecretion of the HCl. Next, other factors, other factors, right? In other factors, we can say that first one is cigarette smoking. Cigarette smoking. ये क्या करते हैं, लिसन एंड रिमेंबर। मैंने आप लोगों को जब व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एथेरोसाइक्लोसिस, आई टोल्ड यू पीपल द सिगरेट स्मोकिंग इज गोइंग टू इन्वॉल्व और एसोसिएटेड विद इंक्रीज सम केमिकल्स और कार्सिनोजेंस एंड दोज आर गोइंग टू कंप्रोमाइज योर ब्लड सप्लाई। ये क्या करता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई, जिससे क्या होता है, आपकी डैमेज जीआईटी म्यूकोसा, राइट। सो ये सिगरेट स्मोकिंग, ये इसका थोड़ा सा रोल है। फिर उसके बाद वी कैन से अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल यूज, राइट।
अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल डायरेक्टली डैमेज योर GIT वॉल, राइट? मीन्स दैट ये क्या करता है, अल्कोहल जो होती है ना, ये डायरेक्टली इरिटेट करती है हमारी म्यूकोसा को, ठीक है? जब बार बार हम यूज करते हैं तो इसको डैमेज, रप्चर, तो उसके अंदर परफोरेशन हो जाती है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर। आपने देखा होगा कभी कभी द पर्सन दोज हु आर एंग्जाइटिक, जिनको एंग्जाइटी, जिनको परेशानी होती है, ठीक है? किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी, तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो है ना, वो कहते हैं कि मेरे मैदे में भी साथ जलन हो रही है, इस वजह से होती है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर। ओके, अब इसमें भी ब्रेन न्यूरो ट्रांसमिशन डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेन न्यूरो ट्रांसमिशन ब्रेन न्यूरो ट्रांसमिशन गेट्स डिस्टर्ब, राइट? इसमें भी क्या होता है, आपकी एसिटाइलकोलिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, एसीएल सिक्रीशन, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी एसीएल प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द pathophysiology of the ulcer, in which we discussed the H. pylori induced ulcer, then we discussed the answers induced ulcer, and then we discuss some other factors, ठीक है? हाइपर सिक्रीशन जिसमें हो जाती हैं, और अदर फैक्टर्स में हमारे पास अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, स्ट्रेस इंड्यूस है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, वी कैन से द base of anti-ulcer drugs. If you people want to study the drugs to treat ulcer, you people should know the base, what is happening at the fundamental level, ठीक है? जब तक आप लोगों को ये बातें नहीं आती होंगी, आप लोग फंस रहे होंगे, ठीक है? आपको पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी आनी चाहिए, लाइक रोल ऑफ और फिजियोलॉजी ऑफ द एसिड प्रोडक्शन, then you people should know the uh, protective mechanisms, and then you people should go for the pathophysiology, then you people will be going to learn efficiently, right? So there is any question you people can ask, otherwise the lecture is over.